जिंदगी वो नहीं है दोस्तों जो आपको मिलती है, जिंदगी वो है जो आप बनाते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू हेडलाइंस ऑफ द डे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट हेडलाइंस ऑफ द हिंदू एंड आवर फर्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज बैंकिंग सेक्टर रिमेन्स स्टेबल resilient says RBI amid Adani imbroglio. It is available on page number 1 and year related to paper 3 economy section say. In this article we have to know about the banking sector in India, emerging challenges and ways to handle them. So friends, recently Reserve Bank of India stated that country's banking system remains resilient and stable amid concerns about the exposure of lenders to the embattled Adani group. बाकी फ्रेंड्स, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कंटेंट हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है एंड लिंक भी अवेलेबल करा दिए गए हैं, तो आप एक बार वहां से देख लीजिएगा। ठीक। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज द इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल ऑफ केरला टू टर्न त्रिशूर इनटू ग्लोबल स्टेज। इट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 5 एंड year related paper 1 आर्ट एंड कल्चर से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट द इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल ऑफ केरला। तो फ्रेंड्स, 13th edition of this festival will be held from February 5th to 14th in Thrissur district. And do you know friends, it began in 2008 by the Kerala Sangeet Natak Academy, and from the world over, independent, experimental and contemporary theatre groups participate in this festival. ठीक। और next important headline is charge sheet scrutiny is not a case of prying eyes. It is available on page number 6 and year related to paper 2 judiciary say. In this article we have to know about the Supreme Court's pronouncement on charge sheets, idea behind the move, implications and what lies ahead. So friends, Supreme Court held that state is not obliged to provide the public free access to charge sheets by uploading them on police or government websites, and the court observed that charge sheet to be private documents and putting up charge sheets for public viewing would violate the rights of accused, victims, even the investigating agencies, and it would also be contrary to the scheme of Code of Criminal Procedure, right? Baaki other points, friends, you can go through this article. Our next important headline is Going Green. It is available on page number 6 and year related to paper 3 energy section. In this article, we have to know about the India's long-term climate action strategy, latest budget announcements in this context and future outlook. So friends, India has committed being net zero by 2070 एंड इसी के कंटेक्स्ट में रिसेंटली बजट में कुछ अनाउंसमेंट्स की गई हैं, जैसे कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम टू बी लॉन्च्ड टू इंसेंटिवाइज सस्टेनेबल एक्शंस, पीएम प्रणाम टू बी लॉन्च्ड टू इंसेंटिवाइज स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज टू प्रमोट अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स एंड 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लान्स टू बी एस्टैब्लिश्ड अंडर द गोवर्धन स्कीम, missed initiative to be taken up for mangrove plantation along coastline, and Amrit Dharohar to be implemented over next 3 years for optimal usage of wetlands. बाकी फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कुछ कंटेंट हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और आप चाहें तो यहाँ से भी कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं। ठीक। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज ऑपोजिशन परसिस्ट विद इट्स डिमांड फॉर प्रॉब इनटू अडानी रॉ। इट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 8 एंड ये रिलेटेड पेपर 2 पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी and its mandate. So friends, recently opposition members persisted with their demand for a probe by a joint parliamentary committee into allegations of fraud against the Adani group made by US-based short seller Hindenburg Research. Now friends, let's know more about joint parliamentary committee. So friends, it is set up by the parliament for a special purpose, like for the detailed scrutiny of a subject or bill, and it has members from the both houses of the parliament and from both the ruling parties and opposition. Now friends, here I have a question for you. क्या इसके members fix होते हैं? आपको अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक। Our next and last important headline is government extends deadline for leg-head solar scheme. It is available on page number 8 and year related to paper 3 environment section से। In this article we have to know about PM Kusum scheme, its aims, components of the scheme, significance, issues and way ahead। तो दोस्तों, इसको हमारी वेबसाइट पे बहुत अच्छे से कवर किया गया है एंड लिंक भी अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा चाहें तो आप कुछ पॉइंट्स यहाँ से भी देख लीजिएगा। बाकी अगर हम ओवरव्यू देखें तो it is aimed at ensuring energy security for farmers in India, along with honoring India's commitment to increase share of installed capacity of electric power from non-fossil fuel sources to 40% by 2030 as a part of intended nationally determined contributions, and the deadline to install 30,000 megawatt solar power capacity in rural area by 2022 has now been pushed to March 2026. ठीक। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। Thanks for listening. For regular updates, you can follow us on various social media platforms.